So today we will talk about the peritoneum. आज हम peritoneum के बारे में बात करेंगे. Peritoneum है क्या? It is a thick, thin, serous membrane. कैसा membrane? Serous membrane. Now, when you talk about the serous membrane, immediately in our mind it comes that we have got the two types of serous membrane also. What is lung? We have seen in case of the lung, and we have seen in case of the heart also. लंग में जो आपका था उसको क्या नाम था उसका प्लूरल and here in the heart you have got the pericardial cavity, pericardium. Both of them सभी जगह पे आपको क्या मिला, एक विसरा है आपका, ये हमारा विसरा है, and we have got the one layer over here and we have got the second layer over here. जो ये पहला लेयर है, ये जो विसरा से चिपका हुआ है, दिस इज द विसरल लेयर, और जो बाहर वाला है ये हमारा हो गया पेराइटल लेयर. द विसरल लेयर everywhere, whether it is pericardium, lung or the heart, this visceral layer developed from the splanchnopleuric plate lateral plate mesoderm. Splanchnopleuric lateral plate mesoderm, and the parietal layer this developed from the somatopleuric lateral plate mesoderm. Since it developed from the somatopleuric lateral plate mesoderm, so it is supplied by the somatic nerve. ये somatic nerve के द्वारा सप्लाई होंगे. This developed from the splanchnopleuric, so it is supplied by the autonomic nervous system (ANS). Since it is supplied by the somatic nerve, so it is painful. So whenever there will be the pain in the trauma to the parietal layer of the pericardium, the pleura or the peritoneum, we will feel the pain. But whenever there will be any sort of trauma to the visceral layer, there will be no pain as it is being supplied by the ANS. So we don't have the, it is painless. It is painless. Everywhere we see the same sort of arrangement, but in cases of the peritoneum, what we see is the fact that we have got the viscera over here. We have got this is the viscera, and next we have got this layer. This is known as the visceral layer. But in this case, we have got the parietal layer over here, and this parietal layer circles like this, and this becomes the parietal layer. And this one is the visceral layer. This one is the visceral layer, and this one is the parietal layer of peritoneum. We are talking about the peritoneum. Talking about the peritoneum. Peritoneum के बारे में बात करें, ये हमारा visceral layer है और ये हमारा parietal layer है. And we have got इस जगह पे, here we have the mesothelium. यहाँ पर आपका mesothelium है. ये we have mesothelium. Here we have got the simple squamous epithelium, which will secrete the serous fluid, and we have got this one is the peritoneal cavity. This is the peritoneal cavity, and this is being filled up with the serous fluid. serous fluid के द्वारा ये filled up रहेंगे. ये serous fluid के द्वारा ये filled up रहेंगे. और ये जो gap नजर आ रहा है, we have got the gap over here. Through this will pass the artery, nerve and the vessels. यहाँ से artery, nerve और the artery, nerve, lymphatics and the veins will pass through this structure, through this gap. So we have got the visceral layer over here, parietal layer over here, and the viscera over here. Whenever we get this sort of arrangement, this is known as the peritoneal structure. This will be known as the peritoneal structure. So what are the peritoneal structure? अब peritoneal structure हमारे पास क्या क्या चीजें जो हमारे जो peritoneal structure में हमारा कौन-कौन से structure आएंगे?
ये हमारा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर है। तो पहला नाम स्टोमक, stomach peritoneal structure. Then we have got the jejunum. Then we have got the ileum. Then we have got the cecum. Then we have got the appendix. And we have got the transverse colon and the sigmoid colon. This knowledge of the peritoneal structure will help a lot when we will trace the peritoneum. So, जो भी इस पेरिटोनियल स्ट्रक्चर है उनका नाम है स्टोमक, जेजुनम, इलियम, सीकम, अपेंडिक्स, ट्रांसवर्स कोलोन एंड द सिग्मॉइड कोलोन। ये सारे स्ट्रक्चर जो है क्योंकि हमारे किस लिस्ट में आते हैं, ये सारे लिस्ट हमारे पेरिटोनियल स्ट्रक्चर में आते हैं। अब हमारे पास दो टाइप का स्ट्रक्चर होगा। अगर हम इस बॉडी वॉल को यहाँ पर में अगर हम ड्रॉ करें, we have got the diaphragm over here, we have got the fossa transverse abdominis muscle over here, और ये यहाँ पर pelvis में हम ये नहीं कर गए। This is diaphragm, this is transverse abdominis muscle, and this is the pelvic region. This is pelvic region. इस स्ट्रक्चर पर this is the coronal section. This is the coronal section. ये coronal section. So we have got the right side, we have got the left side, we have got superior and we have got the inferior edge. ये इतने सारे स्ट्रक्चर हमको इस जगह पे हमको मिलेंगे। Now if you will trace the, अब हम ट्रेस करेंगे किसको, तो ये हमारा डायफ्राम के नीचे डायफ्रामेटिक फासा आ गया, इसका नाम हम दे देंगे डायफ्रामेटिक फासा। ये डायफ्राम के, अब ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस के नीचे हमारा ये आया, इक्वल द फासा transversalis, fossa transversalis, and it enters in the pelvic and become the pelvic fossa. So this is the structure, coronal section showing the abdominal cavity, starting from the diaphragm right to the pelvic region. So we have got the abdominal cavity over here. Is abdominal cavity में, now if you will trace the parietal layer of the peritoneum, what we see that the parietal layer of the peritoneum, this actually is in close approximation with the body wall. Body wall से ये close approximation में है. And if you have got few structure over here, अगर कुछ structure हमारा यहाँ पर में अगर वो हमारा मान लीजिए ये structure अगर हो गया यहाँ पर, और कुछ structure हमारा इस जगह पे structure है यहाँ पर, इस जगह पे हमारे structure में बॉडी वॉल के एब्डोमिनल कैविटी में स्ट्रक्चर है, एंड वी हैव गॉट द पेल्विक कैविटी में कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर में है, किसके नीचे एक पीछे है और एक नीचे। व्हाट हैपेंस कि जब आप ये आपका वी हैव गॉट द viscera over here, and in the viscera this surrounded by the visceral layer of the peritoneum, and we have got the parietal layer of the peritoneum also. अब parietal layer of peritoneum आपका इस तरह से वहां करके इस तरह से, और ये parietal layer peritoneum इस तरह से आ गया, and you have got the अगला जो हमारा लेयर होगा, this will be the body wall. ये हमारा body wall है, इस तरह से body wall। What happens कि अगर ये जो स्ट्रक्चर है आपका, अगर आप इस तरह से इसको ड्रॉ करें और ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर इस जगह से इस जगह पे, एंड अगर ये स्ट्रक्चर इसका एब्जॉर्ब होने लगे, ये वाला स्ट्रक्चर इसका एब्जॉर्ब होने लगे, then what will happen? The next feature will be like this, ये इस तरह से हो जाएगा। So all this structure which is having the peritoneum on the one side,
पेरिटोनियम इनके वन साइड में पेरिटोनियम है, दिस स्ट्रक्चर बिकम द रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर। रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर जो है क्योंकि रेट्रोपेरिटोनियल बन जाएंगे क्योंकि इनके एक साइड में पेरिटोनियम है। और वो पेरिटोनियम क्या हुआ, बाकी पेरिटोनियम क्या हुआ, ये एब्जॉर्ब हो गया। किस, जो ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज जाइगोसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज जाइगोसिस। सो देयर आर स्ट्रक्चर, कुछ स्ट्रक्चर है हमारे पास जो कि इनको हम रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। We have got the retroperitoneal structure and we have got the subperitoneal structure. Subperitoneal, retroperitoneal structure and the subperitoneal structure. तो retroperitoneal में हमारे स्ट्रक्चर कौन कौन से आएंगे? From the duodenum, एक हमारा है duodenum, यहाँ पर हम रेट्रो और यहाँ पर में हम सबपेरिटोनियल लेंगे। सबपेरिटोनियल स्ट्रक्चर, रेट्रो में पहला हमारा स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द duodenum. We have got a duodenum, then we have got the pancreas, then next we have got the kidney, then you have got the ureter and the suprarenal gland. सुप्रारेनल ग्लैंड, ये स्ट्रक्चर आपको हमारे क्या होंगे? सब रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर होंगे because they are on the lateral wall of the abdominal. ये रेट्रो जितने भी स्ट्रक्चर हैं सभी के सभी किसमें होंगे? तो एब्डोमिनल वॉल में। एब्डोमिनल वॉल में ये सारे स्ट्रक्चर हमको एब्डोमिनल वॉल में दिखेंगे। और सब पेरिटोनियल स्ट्रक्चर जो है वो पेल्विक कैविटी में दिखेगा। वो कहाँ दिखेगा? पेल्विक कैविटी में। पेल्विक कैविटी में सारे के सारे स्ट्रक्चर हमको पेल्विक कैविटी। तो पेल्विक कैविटी के स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? जैसे कि मान लो यूनिट ब्लैडर, ब्लैडर आ जाएगा। Then we have got the prostate, then we have got seminal vesicles, then uterine cervix, and finally the vagina. ये सारे स्ट्रक्चर जो है क्योंकि रेट्रोपेरिटोनियल में आएंगे duodenum, then we have got the pancreas, then kidney, ureter and supinal gland. सब पेरिटोनियल में यूरिनरी ब्लैडर, सभी के सभी पेल्विक रीजन के स्ट्रक्चर आएंगे। यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल्स, यूट्राइन सर्विक्स एंड दी वेजाइना, ये सारे स्ट्रक्चर हमारे जो है आएंगे इस जगह पे pelvic region में। and all the structure which are in the pelvic region will be considered on the heading of the subperitoneal because वो उसके नीचे में आ रहा है, वो उसके नीचे में आ रहा है और जो abdominal cavity में है वो उसके पीछे आ रहा है। So they will call as the retroperitoneal. There is nothing much more difference between these two structures. अब अगर हम बात करें कि एब्डोमिनल कैविटी को हमने लिया था, अब हम इस जगह से इसको इस तरह से एब्डोमिनल कैविटी को बनाते हैं। अब प्रिमिटिव रीजन में हम जाएंगे तो जब डेवलपमेंट जब स्टार्ट होगा, देन वी हैव गॉट द फोरगट, देन वी हैव गॉट द मिडगट एंड वी हैव गॉट द हाइंड गट ओवर हियर। ये फोरगट है, ये मिडगट है और ये हाइंड गट है। वी हैव गॉट दिस इस रीजन को हम अगर एंटीरियर माने और इसको हम पोस्टीरियर माने, इसको हम वेंट्रल भी बोल सकते हैं, इसको हम डोर्सल भी बोल सकते हैं। So during the development, and we have got the diaphragm over here.
ऊपर में आपका जो है जो कि डेवलपिंग ऑन द टॉप यू हैव गॉट द डायफ्राम ओवर हियर, यहाँ पर डायफ्राम आपका है, यहाँ पर हियर यू हैव गॉट द डायफ्राम ओवर हियर. नाउ वेंट्रल रीजन में फोरगेट के रीजन में व्हाट यू विल हैव, दिस इज नोन एज द वेंट्रल मेजोगैस्ट्रियम, इसको बोलेंगे हम लोग वेंट्रल मेजोगैस्ट्रियम. और इस वेंट्रल मेजोगैस्ट्रियम में व्हाट वी विल सी, देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ वन स्ट्रक्चर एंड दिस विल बी नोन एज द लीवर एंड दिस फोरगेट विल फॉर्म द स्टोमक. ये यहाँ से स्टोमक बन गया आपका, स्टोमक बन गया एंड हियर वी हैव गॉट द लीवर ओवर हियर. सो लीवर के डेवलप होने से यहां पर में नाउ द वेंट्रल मेजोगैस्ट्रियम, वेंट्रल मेजोगैस्ट्रियम, ventral mesogastrium will be divided into two parts, one is anterior, another is posterior. This lever is connected to the anterior abdominal wall, इस जगह पे ये connected हो जाएंगे and this connection is known as the falciparum ligament. falciform ligament, ये falciform ligament यहाँ पर बनेगा. falciform ligament लीवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्शन कर दे रहा है. नाउ नेक्स्ट वी हैव गॉट द one more structure and the liver is connected to the stomach by means of one more structure and this is known as the lesser omentum. इसको बोलेंगे lesser omentum. ये बन गया आपका lesser omentum. This is the lesser omentum. ये बना lesser omentum. Now next we have got one more structure. Just behind the stomach we have got the development of one more structure, this is known as the spleen. ये spleen आपका बन गया. Here we have got the spleen over here. But and the spleen, then you have got the kidney over here also. यहाँ पर में आपका kidney बनेगा. The spleen is connected to first to the stomach. ये stomach से connected हो जाएंगे. ये kidney से connected हो जाएगा. And the जो किडनी से इसका कनेक्शन है, दिस इज नोन एज द लाइनो-रीनल लिगामेंट. लाइनो-रीनल लिगामेंट एंड जो स्टोमक और इसके बीच में है, दिस इज कॉल्ड द गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट. दिस इज कॉल्ड द गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट. दिस इज कॉल्ड द गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट. ये बन गया गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट. वी हैव गॉट द गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट ओवर हियर. यहां पर बन गया लाइनो-रीनल लिगामेंट. लाइनो-रीनल लिगामेंट ऑल्सो, यहां लाइनो-रीनल लिगामेंट यहां बन गया. नाउ द स्टोमक इज कनेक्टेड टू द डायफ्राम ऑल्सो. ये डायफ्राम से कनेक्ट हो जाएगा स्टोमक एंड यहाँ पर में जो लिगामेंट डेवलप करेगा आपको, इस नोन एज द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट. इज कॉल्ड द गैस्ट्रोस्प्लेनिक, इज कॉल्ड द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट. ये बन गया गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट. सो वी हैव गॉट द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट ओवर हियर. यहाँ पर में डेवलप कर गया एंड वी हैव गॉट द स्प्लीन है यहाँ पर. तो स्प्लीन को जो स्टोमक से कनेक्ट किया वो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट. स्प्लीन को जो लीवर किडनी से कनेक्ट किया, इस नोन एज द लाइनो-रीनल लिगामेंट. लाइनो-रीनल लिगामेंट. नाउ नेक्स्ट, स्टोमक के डिस्टल पार्ट से डोर्सल मेजोगैस्ट्रियम, स्टोमक के डिस्टल पार्ट से डोर्सल मेजोगैस्ट्रियम में यहाँ पर में आपको जो डेवलप होगा, दिस विल बी नोन एज द ग्रेटर ओमेंटम. known as the greater omentum. This is known as the greater omentum. Foregut region is supplied by the celiac artery. Then we have got the superior mesenteric artery in the midgut, and in the hindgut we have got the inferior mesenteric artery. And all of them are the branches of the aorta. तो यहाँ पर भी जो आपको आर्टरी मिलेंगे,
इस जगह पे इसे आर्टरी अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें, यहाँ पर इस जगह पे हम आर्टरी ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और इस आर्टरी से जो ब्रांचेज यहाँ पर में जाएंगे, इसी द सीलिएक ट्रंक के हो गए, या सुपीरियर मेजेंट्रिक के हो गया, और ये आपका जो है इंफीरियर मेजेंट्रिक हो गया. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक. Next we will talk about the reflection of the peritoneum.